Assalamu alaikum students. This is topic 3 of acid, bases and salts. Topic 3 is bases. Bases are those chemical substances which are bitter in taste and soapy to touch. Pishil asan. Base we must call that this change the red litmus into blue. अगर red litmus त्रो कत बेसस मज सह कलर चेंज ग into blue. अगर blue आस तमिक कलर गि चेंज कह. When bases are added to acid, they neutralize the effect of acid. So base kun acid se add karan, ish amuk acid effect neutralize karan. A base is a chemical substance which can neutralize the acid. Simply, the definition of base are those chemical substances which are bitter in taste and are soapy to touch. The definition: a base is a chemical substance which can neutralize the acids. Acids neutralize again. All metal oxides and metal hydroxide are base examples. Sodium oxide या sodium hydroxide यम सारी consider करना as base. Next topic is what do all the bases have in common? सारी base मज के हुई आसान. If acid मज पे सारी acid मज के common आसान तब मज H positive आसान. मगर अगर जो base मज के common, when base is dissolved in water, it produces hydroxide ion OH negative. Right? Negotiations common asan. For example, sodium hydroxide base is water में sodium positive बीच OH negative. यह hydroxide ion common asan सारे base में. Common property of all bases or alkalis is that they all produce hydroxide ions when dissolved in water. Go common property अगर वुचो base में क्या आसान यम सारे में same आसान OH negative ion. गो यम OH negative ion दिवान. Bases may be strong base and weak base. Strong base get tim base in the complete ionized water and produce large amount of OH negative ion. For example, NaOH या KOH potassium hydroxide. Weak base get tim base in partially ionized गसन मगर tim can produce small amount of OH negative ion. For ammonium hydroxide या calcium hydroxide, these are weak base and these are strong bases. Next topic is properties of bases. Bases have bitter taste, feels soapy to touch, turns red litmus into blue, conducts electricity. Go physical properties. Again, chemical properties. Base reacts with some metal to form hydrogen gas. कुछ सारे मेटल सह बेस रिएक्ट करान क्या मेटल सह रिएक्ट करान पे हाइड्रोजन गैस बनान. फॉर एग्जांपल अगर बेस वो सोडियम हाइड्रोजन जिंकस रलान यह बनान सोडियम जिंकेट साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. वो यम सात बेस रिएक्ट कर क्या मेटलन सत बनान क्या हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बेस रिएक्ट्स एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यम सात बेस एसिड से रिएक्ट करना होन अच्छे सॉल्ट प्लस वाटर बनान. गो सोडियम सल्फेट यह सॉल्ट प्लस वाटर. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड. बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. गो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड यह कैल्शियम कार्बन सॉल्ट प्लस वाटर. गो जो बेस रिएक्ट कर नॉन मेटल ऑक्साइड सह सॉल्ट प्लस वाटर दिवान. नेक्स्ट टॉपिक यूजेस ऑफ बेस. First uses it is used for the manufacture of soap, paper, etc. Then it is used for the manufacture of bleaching powder. am khose istemal karan calcium hydroxide. This it is used as an anti-acid. Anti-acid istemal for the magnesium hydroxide which is curing for stomach istemal karan. It is used for the softening of hardware या washing purpose istemal karan. For example, sodium carbonate. Thank you.